Good morning. I can't hear them. Correct me to a center which has maximum number of students. Correct me to a center which has maximum number of students. Take. I can start. Good morning to all dear students. So, I'm Sandeep Singhal, and I'm going to take care of your physics. Now, as I'm told, you people have done up till electrostatics. Yes? Now, in electrostatics, when I say electrostatics, what exactly does it mean? At rest. If I charge a conductor, where does the charge remain? On the outer surface? Is the charge moving or stationary? Stationary. So charges are at rest. Now, if I have a conductor, a conducting rod or a cylinder, and I apply a potential difference across it, what do you think? Will the electric field inside the conductor be zero or non-zero? Not zero. Electric field inside a conductor across which you are applying a potential difference becomes non-zero, right? Now, in current electricity, as far as IITs are concerned, IIT mains is concerned, let me first tell you that the total weightage, the total marks which you will be tested on, the total marks will be 360. How much? 360 marks. 120 per subject. Now, how many questions come in physics? 30. That means plus 4, minus 1. Now, if in the entire current electricity, what are the important topics, what are the important things which you have to understand is A, जो मैंने अभी आपसे start किया, that you will be dealing with conductors inside which the electric field intensity will be non-zero. So one is the difference between electrostatics and current electricity. Now, what are the important topics which you have to study? What do you think is the most important topic to start? Is how do we derive current? Electric current. Right? Number 2, circuit analysis. Have you done circuit analysis in electrostatics? Solve नहीं किया आपने capacitors में circuits? किए? Third will be meter bridge, right? Potentiometer. Yes, Wheatstone bridge. ये basically 3 चीजें हैं, basically 3 things which we have to focus on. Now, IIT JEE के अंदर, out of these 3, these are the 2 most important areas. One is the circuit analysis, and the other is, as far as your Cbse is concerned, you will have a derivation to come on derivation of current. ठीक? तो बताइए सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया जाए? Where do you want to start from? तो शुरू से स्टार्ट करते हैं. Let's start from the very beginning. Now, have you heard of a term called drift velocity? What is drift velocity? What happens inside a conductor when you apply a potential difference through a battery? What do you think is going to happen in a conductor? The electrons will be accelerated.
due to electric field, and then what happens? They will gain certain velocity. Now tell me, when you don't have a potential difference, क्या electrons move नहीं करते? करते हैं. तो फिर उस वजह से करंट क्यों नहीं फ्लो करता? राइट. तो क्या बोलते हैं आप? That at a condition when there is no external electric field, yes, the average velocity of the free electrons is zero. Right? Now, what happens when you apply potential difference? You create an external electric field, and the charged particles accelerate. What is the acceleration they get? What is acceleration equal to? Force upon mass. What is the force acting? If I take E as the charge of the electron, E as the electric field, this will be the acceleration. Okay? Now what happens? That these electrons will be accelerated, but a problem hai. And the problem is that there are positive charges which are also there. So they will collide with them. So when they collide with them, they will lose some velocity. That means they will be able to accelerate only till the time they don't have a collision. क्योंकि जब जितने टाइम के बीच में collision नहीं होगा वो accelerate करेंगे. जब collision होगा they will lose certain velocity. फिर उसके बाद accelerate करेंगे, फिर collide करेंगे. तो हर एक collision के बीच में the speed will keep increasing, the velocity will keep increasing. अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि average velocity 0 की होती है, आपका रीजन क्या देंगे? What would be one word to explain this? Zigzag motion. This is very important. Zigzag motion बोलते हैं इसको, या फिर इसको बोलते हैं random motion. ये दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी एक ही चीज बोलते हैं इसको, because of which now what happens? They will gain a certain velocity. कितनी हो जाएगी? Yes. Now maybe time t1, इसको मैं v1 ले लेता हूं. फर्स्ट कोलिजन होने से पहले टाइम t1 तक वो एक्सेलरेट करेंगे, कुछ वेलोसिटी गेन करेंगे. पहले से ही इनके पास कुछ वेलोसिटी u रही होगी, जिसको आप थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं. तो इस टाइम में इसकी नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? फिर क्या होगा? v2 between the first and the second collision, time will be t2, and thermal velocity will remain. Now, once we know that the number of electrons is very, very large, so instead of tracking one electron, we will talk about electrons as a whole. So whenever you do that, you talk about a term called average velocity. So what is average velocity equal to? क्या लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में? You add all these velocities, है ना? Yes. So once you add these velocities, average of thermal velocity कितनी होती है? तो आपके पास ये बचा ना टर्म. If I take this as common, E by m, I can say T1 plus T2 Tn upon. Now this is called the average. क्या बोलते हैं इसको? Average relaxation. Very good. And this average velocity is called drift velocity. Vd comes out to be E by m. Which school? It's very grand. Do you know? लेट क्यों है? ठीक, इसको नोट कर लीजिए. दिखाना यार, कहीं बाकी लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं. लिस्टिंग दिखाओ यार.
what I'm saying. बताएं तो सही हाँ या ना, जैसे ये तो हाँ ना बोल रहे हो, पता करो. Clear? Right. Now I want you to derive the value of I. Current की value derive करके दिखाइए, कैसे करेंगे? Let me tell you one thing. There is a basic difference between a student aspiring to get into IIT and a normal student who prepares for board exams. Now, a lot of people ask me, so the syllabus is same. What is the difference between students who prepare for CBSE and entrance exam? एक CBSE का student इसको, he will just go through this, try to remember this, mug this up. But a student who's aspiring to get into IIT will think why I'm doing this. So when I ask you a question, suppose I have to ask you derive current. So when I say derive current, it is possible that you don't know how to derive current. And that is exactly what you have to do. But I want that you know nothing. Start thinking. Once you start thinking, you will keep thinking in your exam also. एक बात हमेशा याद रखना. I'm Sandeep Singhal. I'm a BTech from IIT, electrical engineer. I've been teaching for almost like 16 years in the top institutes of India. And I was, if I were to say, I was lucky enough to teach students who wanted to become IITians, they finally become IITians also. There is only one thing which I want to tell you, and that is, जो भी आप, whatever you study today is definitely not going to come in the IIT exam. Unlike CBSE, whatever you study in schools, you write the same thing, you get the same questions in half yearlies, you get the same questions in the board exams. But this exam will have questions which you have never done. Now there are two options to do it. A, for every topic you solve 2,000 problems. Endless. That's not possible. Option 2, you understand the concept clearly, solve 10 problems, and once you start understanding and thinking and develop your own way of attempting problems, that is going to really help you in your entrance exam. So every time when I ask you to do it, don't think कि मैंने क्या पढ़ा था, delete कर दो उसको. अब सोच के बताओ कैसे करेंगे. Now suppose I say current, what would be your first? By the way, how do you define current? I is Q by T. Can I say that? Small n, if small n is the number of electrons per unit volume, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? N, बोलो. E A L by, on an average इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? Drift velocity. So this is N E A. Yes or no? Now there is a problem in this. This is a vector and current is a, I have to map them. So what do? I bring in A here, call it the current density. So what is J equal to? लिखो. And what is VD equal to? क्या निकाला था हमने अभी? What was the value of VD? बोलिए. E, yes, by M into tau. So what is my current density vector equal to? Perfect. Now I'll ask you certain questions. Likho, question number 1. Now every question you solve should be solved in less than 30 seconds. All set? By the way, what is this called? इस टर्म को क्या बोलते हैं? Very good. So can I say that लिखो J equals sigma E, लिख सकता हूँ? And what is sigma called? ठीक. Now once you do this, आपको वरना करना क्या है? अब एक
ये सारी की सारी चीजें एग्जाम के लास्ट डे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे. ड्रॉ रिव्यू बॉक्स, ऐसे बनाओ रिव्यू बॉक्स. अब जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपने डिराइव किए उनको फटाफट यहाँ लिखो. लिखो क्या लिखो, पहला फॉर्मूला क्या लिखो, जल्दी बोलो. ऑल ऑफ यू एक आवाज में बोलो सब लोग. नीचे देख के नहीं बोलना, वैसे बताओ. हाँ, या ई बाय एम इनटू, ओके, व्हाट इज द सेकंड फॉर्मूला यू लर्न? I think J is better. NE, okay, and the third? Tick. Now on the basis of this, I'll give you certain questions. Let's see JEE mains के अंदर what type of a question are going to ask. एक कंडक्टर बनाओ. I'll call this section as P and this section as Q. This conductor is a non-uniform conductor. Write the question. And the question is, you have to tell me electric field at P and electric field at Q, which is greater and why? That's question number one. The question number two is, the rate of electrons crossing per unit time. क्या बोला मैंने? The rate of electrons crossing per unit area, time नहीं रखते, area रखते हैं पहले. Per unit area at P versus at Q, which is greater than Y. Third, the rate of heat generation per unit length. The rate of heat generation per unit length greater at P and Q, P or Q. And fourth, the mean kinetic energy of free electrons. The mean kinetic energy of free electrons is greater at P or Q, and why? Can I see something? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? कहां पर जाना पड़ेगा मुझको? यहां पर. यस. व्हाट इज इक्वल टू? You know conductivity for a material is constant. So what is E dependent on? J. And what is J? Current. Now, ये पूरा जो कंडक्टर है इसमें करंट कांस्टेंट है. यस. आई इज ए ज्यादा किसका? पी. तो करंट डेंसिटी किसका कम होगा? जिसका ए ज्यादा है. तो क्या लिखूं? ई पी इज लेस देन ग्रेटर देन? लेस देन. एरिया ज्यादा है, करंट डेंसिटी वेक्टर कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम होगी. लिख लिया? नेक्स्ट क्या पूछा मैंने? रेट ऑफ हीट जनरेशन. क्या लगता है आपको? हाँ, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बताओ पहले. बोलो बोलो बोलो. What do you mean by rate of electrons per unit area? Current density? Yes. Yes or no? है ना? तो current density तो आपको पता ही है. Clear? Third, rate of generation of heat per unit length. Rate of heat generation formula क्या होता है? I square R. रेट ऑफ हीट जनरेशन पर यूनिट टाइम यही होता है ना. आई को क्या लिखूं? आई तो कांस्टेंट है ना. नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर दीस टू सिचुएशंस, यू नो आई इज कांस्टेंट, सो डोंट फिडल विद आई. किसमें चेंज करेंगे?
ये कितना है? उसने पूछा हीट जनरेटेड पर यूनिट, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? आई स्क्वायर रो ए, ये दोनों कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका एरिया ज्यादा तो इसका हीट जनरेशन यहां पर कम। क्लियर? Now, finally, what was the question? Mean kinetic energy of free electrons. ये कैसे निकालें? What do you mean by mean kinetic energy, by the way, of a free electron? What is kinetic energy equal to? Half mv square. Now, when he says average, he means velocity is drift. So, what is he talking about? Half m vd square. Yes or no? Half m vd ज़्यादा कहाँ पर है? How is vd related to area? जोर से बोलो. How do you know that? NEA vd. Yes or no? I is constant, therefore vd will be inversely proportional to area. Area ज़्यादा कहाँ पर है? Here. So the drift velocity here will be less. Therefore the mean kinetic energy of the electrons, free electrons here will be less. लिखो. Okay. This is. Can I correct any one of them? Should I go to Sudha Madhavi? Yeah. One of them, any one of them, just highlight it. Yeah. Good morning. Good morning. Hi, good morning. Can you hear me? No. Who's this? Teacher or student? Can you hear me? Okay, the mic is not that great. But can you hear me? If you can hear me, just raise your hand. Great, great, great. Are you understanding what I'm saying? Raise your hands if you are understanding. Just raise your hand. Great. Fantastic. Great. चलिए, let's go to the next question. Start. चलो, मचाते हैं. मचाते हैं. Potential difference is applied across a copper wire. Perfect. The diameter is D and the length is L. There's a wire, conducting wire. Okay. I've applied a potential difference across this. The diameter is D, that's the diameter. And L is the length of the wire. Right? Now my question is 3. You need to tell me the effect on the drift velocity. VD. Question part 1. If voltage is doubled, V,
becomes 2D. Effect on drift velocity. Question number 2. The length L is doubled. The effect on drift velocity. The diameter D is doubled. Individually, what is the effect on the drift velocity? That's what you tell. Thirty seconds. पहले फॉर्मूला बता क्या लिखूं? What should the formula should I use? ये चलेगा ना? Very good. E can be written as E, B, right? Yes or no? Okay. So what you're saying is, when I double this, the drift velocity doubles. Length, when I double this, half. And what about the diameter? Search it. Think. I'll count till 10. 1, 2, गलत जवाब. 3, सोचो. Yes. क्यों? सी, आप जबरदस्ती क्यों ढूंढने लगते हो कुछ? I mean, exactly this happened in IIT. They called certain students and told them, the cameras are on. It's an IIT JEE paper. 2 plus 2 is how much? Everybody thought 4 cannot be the answer. Why? Because IIT is asking that. Do not get stressed out because that's a JEE exam, because you are the best kids. You are the best students in the country. हमेशा ये फील रखना that CBSE board ने हमको best हम थे तभी हमको select किया. So get it. Clear? Perfect? ठीक है? समझ में आ गया? Now let's talk about circuits. कैसे लगता है circuit solving? How do you like solving circuits? What method have you learned in solving circuits? Kirchhoff's law. Yes? जो circuit analysis आप करते हो, what is the essential requirement to solve any direct current circuit? Current has to be steady. Current has to be steady. Yes? So whatever you do in circuit analysis, now what do you mean by steady state current? Like for example, when we say Gauss theorem, what happened Gauss theorem? What is Gauss theorem? Spell out. जोर से बोले. When I say total, what does the total mean? What does that total mean? Field lines enter कर रही हैं, field lines exit कर रही हैं. इन दोनों का difference? Yes, the difference of the lines which are coming out and the lines which are coming in. इन दोनों का difference net है ना? इसी को total बोलते हैं ना? Now, somebody asked me a question, sir. Gauss told us that if you don't have a charge enclosed, there is no field, or there is no flux. Statement सही गलत है? If I place a charge outside this room, will this room have flux? Yes or no? तो है या नहीं है? लेकिन नहीं है. होना नहीं चाहिए, but लगता है. क्यों? Why do you think so? Because again the point is, Gauss did not talk about flux. He talked about net flux. If I have a charge outside this room, there is flux. There are lines which are coming in. There are lines which can be seen. That is why there is electric field. But the number of lines which are entering are equal to the number of lines which are. So the difference is, note karo CC. It is not flux, it is net flux. And net का मतलब भी clear कर लो. The flux which is leaving minus flux which is entering.
When you deal with Gauss theorem, you deal with net flux and not flux. And net flux is exit minus entry. ठीक है ना? Steady state current में भी यही होता है. Steady state current का मतलब ये है that इसको क्या बोलते हैं? What is this called? Resistance. Now, what it says is, if I would draw to a simple diagram, the amount of current which starts from here, ये यहां पर एंटर करेगा, ये I1 होगा और ये I2 होगा. तो जितना करंट एंटर किया उतना ही करंट एग्जिट किया. दैट इज व्हाई वी से एट एनी जंक्शन द नेट करंट इज 0. इफ दैट हैपेंस देन इट इज अ स्टेडी स्टेट. लिखो, द नेट करंट एंटरिंग एनी जंक्शन हैज टू बी 0. हम सिर्फ इसी को यूज करेंगे. वी विल ओनली यूज दिस. Right? Now, I'll ask you only 2 questions to find out the value of resistance. Like, for example, if I say that there is a cylinder, a cylindrical conductor, the length is L, radius is R, there is potential V1 here and there is potential V2 here. That's case 1. In a case 2, I draw another cylinder. There is a cavity in between. This is hollow. This is solid. There is a potential V1 here and potential V2 here. This radius is R1 and this radius is R2. Can you tell me the ratio of resistances in both the cases? What is R1 by R2? Do you think it will be same or different? What इसका क्या मतलब होता है? V1 इधर, V2 इधर, V1 इधर, V2 इधर. What difference will it make to resistance? अब समझिए बात. आप resistance लिखते क्या हो? Yes? लिखते ना? या आप ये लिखते हो that delta V is I. Do you agree? और रेजिस्टेंस को क्या लिखते हो आप? Rho L by. Please understand very very important thing, and that is आप इस रेजिस्टेंस में when you use L and when you use A, L has to be in the direction of current, A has to be perpendicular to the direction of current. Note करो. L has to be in the direction of current and A has to be in a direction perpendicular to current. Okay? Now, आप मुझे बताओ. That means, and how do you decide the direction of current? Potential difference. Current will flow in the direction of potential difference. तो current का direction यहाँ पर क्या होगा? ये होगा. और यहां पर क्या होगा? Yes or no? That means इसी डायरेक्शन में L होगा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर एरिया होगा. Similarly, in this case, what will be the direction of L? Along this, and this will be L and this will be, note करो. Now, having said this, let's derive this. Who will help me? शुरू करते हैं. क्या लिखूं इसको? R. क्या लिखूं? It should be rho. L is this. A is this. इधर आना. यहाँ क्या लिखूं? What should be here? शुरू करो. Now tell me one thing. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V1 यहां और V2 यहां पर रखा है, मेंटेन किया है. आप जैसे से आगे जाएंगे, won't this potential difference change?
ये V1 है, ये V2। आपने एक स्टेडी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ। नाउ व्हेन यू मूव अप, a length will change from this point to this point. As far as the area is concerned, एरिया कौन सा लोगे आप? ये वाला, ये सिलेंडर है, जैसे एक खाली पानी की बोतल, ये सिलेंडर है, ये जो कैप है, ये एक अंदर सिलेंडर जा रहा है, समझ लो। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे कर रहा है। लेंथ कौन सा लोगे? अलोंग द रेडियस। और एरिया कौन सा लोगे? This will be the area. Now, curved surface. So as you move up, the area will keep changing. भाई अगर ये डिस्टेंस x है, एरिया कितना होगा? 2 pi x into L. आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हो 2x, it will keep changing. तो हम क्या करेंगे? एक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस निकालिए और फिर इसको क्या करेंगे? तो मुझे बताओ, टेल मी वन थिंग, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्ट्रिप? सोच के बताओ। अब लेट्स डू इट फास्ट। dr लिखूं, रो क्या लिखूं, L कितना लूं? लेट मी टेक दिस डिस्टेंस एज x. What will be the small length? dx, yes or no? And what will be the area? 2 pi, radius कितना लिया आपने? x. What is the radius? x. So what will be the circumference? 2 pi x. Length कितना है? L. क्या लिखना है? Limits. What is the answer? फटाफट बताओ। क्या लिखूं? रो बाय 2 pi L ln L। ठीक नहीं है तुम्हारी? ठीक है ना, पक्का? देखा किसी और सेंटर में? राइट, शुरू करें। थर्ड केस में आप देखते हैं आपने सबसे पहले कौन सा आपका? लो, इट्स अ स्फीयर, राइट? Resistivity is rho. Radius is r1. This radius is r2. This v1 is the potential inside. v2 is the potential outside. Answer बताओ। कौन बताएगा? Who's going to tell me? चलो शुरू, मेरी तरफ देखो, जरा फटाफट आंसर बोलो। क्या लिखूं? dr इक्वल टू, इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस निकालोगे ना? बोलो हाँ है ना? यस और नो? करंट का फ्लो करने का डायरेक्शन कौन सा होगा? रेडियली आउटवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और एरिया कौन सा लोगे? ये वाला। क्या लिखूं? dr इक्वल टू, बोलो, रो dx। ये एरिया कितना होगा? स्फीयर का एरिया कितना होता है? एक्स स्क्वायर रो एल बाई यही होता है ना? इसको इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक? जल्दी से कितना है? परफेक्ट। क्या आंसर आ रहा है बताइए? रो बाय, ओके, R1 R2 ले लूं अपॉन, ठीक है,
Now, अभी बात देखो तुम ध्यान से। आईआईटी जे के प्रिपरेशन के लिए व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज एक तीर से बहुत सारे निशाने करने होते हैं। टाइम बहुत कम है, 3 minutes. All these things which I've discussed, these I gave you 3 questions. In all the 3 questions, they could have asked you the value of capacitance also. You've done capacitance? Suppose he says, find the capacitance of this. He could have asked you this question also. Now, if you have understood how to calculate resistance, we have developed over a period of time. I have a site. My name is Sandeep Singhal. Google पे आप जाएंगे, Google करेंगे. It shows think without ink in physics. I've developed shortcuts for every question in physics. कि time की binding होती है. Now, you know how to calculate R? If you want to calculate C, use this result. This is going to be a very, very important tool. लिखो, RC is rho epsilon naught. Now, that means if you know how to calculate R, you can actually calculate. And if you remember how to calculate C, you can calculate. That is how you can save time. You getting my point? So you can use R or C to calculate the either way. Now, finally, IDJ can ask you this. Have you heard of a term called frustum? Yes? ऐसा होता है ना frustum? Yes, है ना? So this radius is R1, this radius is R2. This length is L, this potential is V1, this potential is V2. You have to calculate the resistance of a frustum. क्या करोगे? Integrate करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा. It's going to take a lot of time. Now I'll give you a beautiful solution. Are you guys ready? इसको सिलेंडर बना दें. Yes. तो लीजिए, I'm converting this frustum into a cylinder. The length will remain L. This radius, by the way, R, becomes under root R1 R2. लिखो. अब आप पूछोगे सर हाउ डिड यू कैलकुलेट इट? मैंने दोनों के वॉल्यूम्स इक्वेट कर दिए. यस और नो? सो R is under root. अब इसका आंसर क्या लिखोगे? What would be the answer to this question? बताओ. Rho L by pi R square. कितना हो जाएगा? Finished. It's done. Over. So I've told you how to calculate resistance. अब एक और टर्म होता है हाउ टू कैलकुलेट. उत्तर प्रदेश के आदमी है ना, मजबूत चीजें चाहिए, हल्की चीजें चाहिए तो टूट जाएंगे, है ना भाई? Have you heard of मुजफ्फरनगर? वहीं के हैं, लगता भी होगा ना? You're from which place? अरे बताया तुम हमारे इलाके से हो. और आप भी गाजियाबाद. पूरा उत्तर प्रदेश ही की जगह आया. अच्छा सचिन जी बताओ, how many of you have decided to get into IIT in top 500? पक्का जान लगाओगे? पक्का. चलिए आपको एक सर्किट एनालिसिस में बड़ा एक इंटरेस्टिंग तरीका बता. मुझे बहुत बच्चों ने बताया कि सर सर्किट एनालिसिस टेक्स लॉट ऑफ टाइम. आई गिव यू 2 मेथड्स. यूज इट. उस 2 मेथड के अलावा आपको सॉल्व करके कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम कभी आएगी, पहले उसको समझ लो अच्छी तरह से. आई एम गोइंग टू टेक अ मेथड कॉल्ड नोडल एनालिसिस. आई एम नॉट गोइंग टू यूज किरचॉफ्स लॉ और एनी लॉ. दिस इज tried, tested, shortest method to solve a problem in circuits. Let's first understand what this method is. By the way, node is also called a junction. Now, what have you heard about junction? I told you in a junction in steady state,
The net current is, yes, अपन लोग इसको इस्तेमाल करेंगे. जैसे सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक बैटरी, और क्या होता है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, फिर इंडक्टर आता है, वो बाद में करेंगे. ये तीन है. इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस. We say this is at a higher potential, this is at a. That means when I move from A to B, I can say if the potential difference is V, can I say VA higher to lower minus V is VB? चलेगा? If this current is I, this is A and this is B, can I say VA minus IR is VB? चलेगा? Current always flows from higher potential to lower potential. So higher minus something will give you lower. So higher में से कम किया, lower आ गया. चलेगा? If this plus charge is Q and this is minus Q, this is A and this is B, can I say VA minus Q by C is VB? चलेगा? ये आपको मालूम है. I agree, I understand that you know this. Right. Now, we'll take it further. And how do we take it further? Like for example, if I say इसका पोटेंशियल 20 वोल्ट्स है, इसका 10 वोल्ट्स है, इसका 1 ओम है, दिस इज 2 ओम्स एंड दिस इज 3 ओम्स. एक आर्बिट से सवाल लिया. And he asks you, find the current in this element. The one method is आप यहां से I लोगे, I1, I2, तो पूरी की पूरी कहानी. इसको आसान कर देते हैं, जरा ध्यान से देखो. Node is a junction, and a junction is a contact point between two elements. जैसे ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये जंक्शन. This is an element, this is an element. ये जंक्शन, ये जंक्शन. क्यों? A battery is connected to a resistance. So wherever two elements connect, that's called a. Now, out of any of these, this is also called a node. आप किसी भी एक नोड का पोटेंशियल जीरो ले सकते. You can take potential of any one of the nodes as zero. किसको लूं? किसको ले लूं? जीरो. चलेगा? एक किसी को ले सकते हो. रेड ले लेता हूं. कैन आई यूज रेड मार्कर ऑल्सो? डूड, कैन यूज रेड मार्कर? जीरो. किसी का भी रेफरेंस ले. लाइक जैसे आपने बैटरी का एक टर्मिनल प्लस लिया, एक माइनस लिया, इसको 10 ले लेते हैं, इसको 0 ले लेते हैं. ना कैन आई टेक दिस एज 10? बोलो हाँ है ना? यस. अब हर एक जंक्शन का, हर एक नोड का आपको पोटेंशियल निकालना. यू हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ एवरी नोड. इसका पोटेंशियल कितना होगा? जल्दी बोलो. लिखने में टाइम मत वेस्ट करो. आई गिव यू माय नोट्स. जो कुछ है आई गिव यू माय नोट्स. डोंट वरी, सिर्फ समझने में ध्यान रखो. परफेक्ट. ये कितना है? ये कितना होगा? यहां तक, यहां तक. ये कितना होगा? 0 plus 20. From small to big, lower to higher, 0 plus 20 will be. इसका पोटेंशियल कितना हो गया? Fantastic. What will be the potential at this point? Now, I don't know the potential at this point. I'll assume this to be x. Unknown potential को आप x ले लीजिए. Perfect. Now, since the current is in the steady state, we will assume this potential to be highest. That means इस point से current हर जगह बाहर जाएगा. Out of all these, if this is the highest potential, then current will go like this, current will go like this, current will go like this. Total current 0 है. अंदर या बाहर, तो मैंने बाहर का 0 ले लिया. चलेगा ना? समझे कि नहीं?
अच्छा, अब मुझे बताओ यहां करंट कितना फ्लो करेगा? इफ दिस पोटेंशियल इज x एंड दिस इज 10, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? x माइनस, फैंटास्टिक, रेजिस्टेंस कितना है? ये करंट हो गया, प्लस x, ये कितना है? x माइनस रेजिस्टेंस कितना है? प्लस ये कितना है? इसका पोटेंशियल कितना है? x माइनस बाय 3 इज, and the whole thing will be equal to x. निकालो. Should I repeat it again? Select any zero potential. Try to write potentials of all the nodes. The potential of the node which is not known to you, uska potential x assume karo. That is called unknown potential. Assume, लिख लो points को लिख लो. Take, first of all, let's define a junction or a node. What's a node? It's a junction, right? It is a point where two elements meet. Point number one. Point number two is assume one junction or one node, we call it a reference node. Assume the potential of that reference node as 0. Okay? Third point, try to find out potential of every node. हर एक नोड का आपको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है? ठीक. And for unknown, assume that to be x. If you have more than one node, y. Perfect. x कितना आ रहा है इससे ऊपर? कितना? 1. Now, see the beauty of this method. If he says, find the current in this element, ये कितना है? x. ये कितना है? 0. What is the value of this current? x कितना निकाला? Minus upon answer. If he says, समझ रहे, मेरी बात सुन रहे हो ना? If he says find the current in this resistance, ये कितना है? ये कितना है? So can I say 10 minus 120 by 11 by, आ रहा बात सही है? If he says find current here, what is the potential? X, 120 by minus by current. Click. Are you understanding this? एक तीर से कई निशान. मेथड वो यूज करो जिसमें से आप मल्टीपल चीजों का फायदा उठा सकें. Fast. But can I see some students there? Just like see the, let me see what are they understanding or not. That doesn't raise their hand. ठीक है, डन. अच्छा, सपोज, right, okay. Now suppose they want to ask you find equivalent resistance between these two points.
क्या निकालना है? What is R equal to? V by I. What is the potential difference across these two terminals? V. This is okay. I can count 10. I कितना फ्लो कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है ना? कितना हुआ? 10 माइनस ये I2 कितना निकाला था आपने? 10 माइनस x कितना था ये? कितना? 10 बाय? फैंटास्टिक. पक्का? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10. करंट कितना फ्लो कर रहा है? ये आंसर है. Finished. That means by one method you can solve any number of questions. Clear? अब इसमें मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिस कराता हूं. लिख लिया आपने? Like in class 12, you must have done this question. किया नहीं? कैसे करते हो आप इसको? So this is V and this is 0 and they're all resistances. कैसे करते हो? किरचॉफ लगाते हो ना? अब इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो. 30 seconds. What is this? V and this is. I'll tell you one thing. ये तीनों करंट सेम होंगे. All the three currents will be same. Their resistances are same. The potential difference will also be. अब देखो ध्यान से देखो. I'll take this as x. Unknown potential. ये कितना? ये भी कितना होगा? हाँ या ना? अच्छा. जो करंट यहां से एंटर करेगा वही करंट यहां से एंटर करेगा. I mean if there are to reach this destination, start कहां से किया? I and I. लीव कहां से करेगा? I and. जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा. ये कितना है? V माइनस. तो ये कितना होगा? V माइनस. ये कितना है? तो ये कितना होगा? अब किसी एक नोड को पकड़ लेते हैं. ये पकड़ लिया. लिखना जरा. क्या लिखूंगा? x माइनस अपॉन. ये कितना है? सेम. 2 से मल्टीप्लाई कर दूं. प्लस ये कितना? 3 जगह जा रहा है ना करंट. इसको नोट लिया ना. 1 2 3. व्हाट इज दिस? v माइनस x बाय r. व्हाट इज दिस? सेम. और ये v माइनस x माइनस v. ये टोटल किसके बराबर होगा? I told you select any node. Node का potential आपको highest assume करना. So if you assume this to be highest potential, the current will go here, here and here, and steady state में net current should be. ये current यहां से यहां कितना flow करेगा? X minus V minus X by R. How much current will flow from here? Twice कर दिया. How much current will flow from here? X minus V by R. And this total current should be x निकालो. Finished. कितना आ गया x? क्या इतना? 2x 4x 5x 2v 3v. What is x equal to? Yes or no? You know the value of x? Yes or no? अब बता क्या चाहिए, क्या निकालना चाहते हो? What do you want to find out? Tell me, what do you want to find out in this question? They ask you find out the value of current in this element. Say this element. क्या करोगे? x minus upon
He says, I want to find current in this element. What is this value? V. This is X. What should be the current? V minus X by period. They want to ask you what is R equivalent. Now tell me, how do you find R equivalent? What did I tell you? What is this potential? And this is V by I. I कहाँ का जा रहा है? इधर, इधर और इधर. How much current is flowing here? This potential is, this is, what is the current? V minus, same ये, क्या करूं? X मालूम है? R equivalent आ गया. 30 seconds. Speed up. Calculate in mind. ये लिखने की आदत छोड़ो, because in the paper you will not get sheets to do practice. So कम स्पेस का यूज करना सीखो. छोटा लिखा करो, स्मॉल. आ गया आंसर? ठीक है, पक्का कॉन्फिडेंट? ये गलत बात. कॉन्फिडेंट होना चाहिए. सब करेगा. कितना आ रहा है तुम्हारा? कितना आ रहा है? गैंग ऑफ बागपत. ग्रेट. मजा आ गया भाई? तो बढ़िया हो गया ना? और खेलना है फिर? और खेलते हैं. ठीक है. हर एक क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में 10 ऐसे सवाल लेके आना जो आपसे होते नहीं, वो डिस्कस करेंगे. आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग योर डाउट्स ऑल्सो. लेट इट नॉट बी अ मोनोलॉग. ब्रिंग दोज क्वेश्चंस व्हिच यू फील यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. ब्रिंग दोज क्वेश्चंस टू अस. आई विल गिव यू शॉर्टकट्स, टेक्निक्स. अब एक क्वेश्चन सेकंड देखो आप. लेट्स सी. 1 मिनट में सॉल्व करके दिखाना है आपको. जेई में आपको 3 मिनट मिलेंगे. प्रैक्टिस करो. 1 मिनट में खेले. ये V, ये 0. आ जा. कम द बोर्ड. कम बना के दिखा. कम उठो. आप सब. मुझे सिर्फ ये बता, हर नोड के पोटेंशियल्स क्या क्या लोगे? ये और ये वाला सेम होगा? पक्का? अग्रीड? पहले यहाँ देखो, सेम होगा ना? इसको एक्स ले ले, इसको क्या लेंगे? सेम करंट. एक्स. फैंटास्टिक. नहीं, ये सिमेट्री ऐसी है ना, इसको छत मान ले, सीलिंग. इसके क्रॉस ये दोनों पोटेंशियल सेम होगा ना? ये सेम होगा क्या? सही होगा. -1 बाई. जल्दी ले. अच्छा, जो करंट यहां से फ्लो करेगा वही करंट यहां से ऊपर आएगा. तो अगर ये V है और ये Y है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस हियर? V माइनस, आवाज निकलनी चाहिए, ये कितना होना चाहिए? V माइनस Y. वो कितना है? तो ये कितना होना चाहिए? V माइनस Y. लिख. फैंटास्टिक. ठीक, पक्का. एक चीज और खेलते हैं. फिजिक्स तो खेलते ही है ना. जेई का एग्जाम है, महाउत्सव है ये. इसको अगर आपने ये सोच लिया ना कि अरे यार IIT जेई एग्जाम, तो अगर ये सोचा यार IIT जेई एग्जाम, नेक्स्ट 1 साल बाद IIT दिल्ली में पढ़ रही होंगी, आई विल वेयर दैट टी-शर्ट व्हिच सेज IIT दिल्ली. ये जैसे फीलिंग अंदर आएगी, थकान खत्म, ओवर एंड आउट, फिर खेल में मजा. ये खेल है, ये खेला. लालू की याद होगी. खेला समझना. पक्की बात. आपने क्या बोला? ये करंट सेम होगा? बोलो, कौन बताएगा? डू यू थिंक दिस करंट विल बी सेम? क्यों नहीं यार? तो ये आई बोल, ये आएगा कितना? यहां से कितना आएगा? सारे आई क्या आएगा? ये करंट सेम है. ये आई सेम है. तो मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस ये भी सेम होना चाहिए. आर सेम है. ये आई बोल, हाँ है ना? जोर से. ये कितना? सेम करंट, सेम रेजिस्टेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस. ये डिफरेंस कितना है? और ये कितना है? एंड दे शुड बी. तो एक्स कितना हुआ? लिख.
एक्स क्यों लिख दिया पागल है? वी बाई टू कंफ्यूजन क्रिएट कर, लिख वी बाई टू। हाँ, ये कितना मौज आ गई ना जिंदगी की? आई कि नहीं आई? इसको क्या ले लूं? एक्स ले लेते, लिख, रेड पेन से लिख। ये कितना होना चाहिए? एक्स लिख, ठीक है, राइट। एक्स की वैल्यू निकालना जरा, 30 सेकंड, 30 सेकंड, जल्दी जल्दी। कोई एक नोट पकड़ो, नोट पकड़ो जल्दी से। कौन सी नोट ले रहे हो? ये ले लें क्या? एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं। चलो पहले एक्स इक्वेशन बताओ, आप बताओ। एक्स इक्वेशन बोल। कारण तीनों जगह जाएगा, बैठे बैठे बता, बोल। फैंटास्टिक, वेरी गुड। वेरी गुड। बाई, वाह, प्लस वाई, वी नहीं है ये, वाई इक्वल टू एक्स आ गया। एक्स और वाई में क्वेश्चन आ गई। दूसरी आप बताओ। हाँ जी, आप बताओ, पकड़ो इसको, वाई बोलो, जान लगा, जल्दी बोल। आगे, इक्वल टू कितनी क्वेश्चन है, वेरिएबल कितने हैं, खेल खत्म। बस निकालो, ये घर पे कर लेंगे इसको, एक्स वाई निकल जाएगा ना, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। एक्स और वाई आप निकाल लोगे, निकालना क्या मेरे को? अब किसकी बारी है? अब तुम्हारी बारी है। थोड़े सर चतुर्वेदी साहब, थोड़े और बच्चे बैठाओ और थोड़ा उसको टू वे ट्रैफिक करो, वो देख नहीं पा रहा है। चल तेरी बारी है, लिख, क्या लिखूं? द गर्ल्स आर वेरी गुड, द स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू। इनको सिर्फ बताना होता है और इनके पास काम शुरू हो जाता है। बता भाई, तेरी बारी है अब। तो यार वी बाई टू भी बोल देना यार, क्यों दिमाग खराब कर रही है? हाँ, ये बोल, ठीक, घबराते नहीं है। कितना? खत्म हो गया। ठीक, एक टेस्ट ले लें छोटा सा, पक्का? चतुर्वेदी साहब इनाम दे सकते हैं? अच्छा, चतुर्वेदी साहब से बात ही, वो नाम ही नहीं ले सकते आप। I sir, you have not shown me South India. I am desperate to see South India. दिखाओ ना यार, show me Chennai. Yeah, show me Chennai. They're not ready. They're not ready. Great. ओए, उत्तर प्रदेश आना है, ताकत लगाओ। Good. Thank you, sir. Now let me give you a question and let's test you. What could be the possible third option? Tell me. The possible third option can be, what options have we taken? ये V था, this was 0. We took this as V and this as, let this be the third option. Start. This is the third option. Start. Will you come on the board and solve it? कौन करेगा बोर्ड पर? Okay, let's do it. Can I take this as X? Yes? Achha, now see. Current enters here, here and here. This current and this current will be same. This current and this current will be same. Am I right? पक्का ना? This is already the same. ये और ये same, ये और ये same. What is this? This is, can I take this as X? कह सकता हूँ? ये potential difference कितना हुआ? ये कितना हुआ?
ये और ये करंट सेम है ना, x ले लो उसको, ये कितना होगा? Let me take this as y. By the way, if this is y, what is the potential difference here? V minus. So what is the potential difference across this diagonal? कितना है? ये v और ये कितना है? ये difference कितना होगा? ये कितना है? 0. तो जो potential difference इधर होगा, same potential difference will be here. So what is this? V minus. So this should be v minus. This is. So this is. Find x and y. दोबारा. Should I repeat it again? दोबारा बताता हूँ. What is this? V. This is Z. The question is they want to ask, find the equivalent resistance between V and Z. Yes or no? Yes or no? Do you agree that this current and this current is same? So if I take this as X, this will be X. But there are 3 ways to go. This, this, and this. These are similar ways. This is a different way. Now if this is X, this is X. Now, this current and this current is same. Similarly, this current also has to be same. You understand what I mean to say by this is, if I replace this by 0 and this by V, suppose मैं 0 धर लिया हूँ, V धर लिया हूँ, I can same current here. That means this current, this current, this current, this current should be same. If the resistances are same, the potential difference should also be. What is this? What is this? What is the potential difference? This should be period. This should be. Now, check this diagonal. ये diagonally यहाँ पर आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना? If I take this as y, ये भी उतना ही potential difference होना चाहिए. ये कितना है? V minus y. ये कितना था? 0. ये कितना हो गया? लिखो. So can you solve for x and y? Let's try. So value of x. हाँ जी, what is the value of x? कितना है? 3v/2. इक्वेशन बताना क्या लिखी है आप लोगों को? इसका इक्वेशन बोलो, सब लोग बोलो, क्या लिखूं? x y अपॉन, ओके, वेरी गुड, प्लस x minus v by equal to, perfect. Now let's take this as node. क्या लिखूं इसका इक्वेशन? y minus v minus y by r, right? What about this? Perfect. What about this? This should be equal to, दो इक्वेशन है ना? What is the value of x and y? आप बताओ. Okay. Something wrong here. x कितना आ रहा है आपका? 3v/2. तुम्हारा कितना आ रहा है?
करो करो करो, निकालो निकालो, आई वांट टू फाइंड द आंसर। करो करो करो। Calculation also is a very important tool. जल्दी जल्दी। What's that? 90 by 40 x t. इतनी देर तो इक्वेशन सॉल्व करने में, I can't understand why. कितना आ रहा है x? बोलो, what is x? मैं सॉल्व करूं? ये चार लड़कियां लगी हुई है, सॉल्व नहीं हो रहा। You want to solve it? Why? यस आंसर क्या आ रहा है? रोते रोते क्यों आ रहा है? हाँ, x, what is the value of x? अभेंस, अमेजिंग। कैसे हो सकता है ये? तेरा आंसर बोल। 9v by, and y is, she says 4 by v set. पक्का? Now, the point is, see, this shows lack of practice. This is not 12th physics or 12th mathematics. This is 8th, 9th, and 10th. When you know how to solve equations. Don't be disheartened, but this is a warning sign that we are not solving problems regularly. Clear? Anyway, x और y आ गया। क्या निकाला था हमको? R equivalent। क्या लिखूं इक्वेशन? बोलो बोलो, सब लोग बोलो, चारों। v by i। हाँ, i कितना बोलो? i कहाँ? छोड़ दो उसको अब। लीव द कैलकुलेशन। लिसन, लीव द कैलकुलेशन। i कौन कौन सा लू? विच करंट शुड आई टेक? ये v है, ये 0 है। क्या लिखा आपने? v माइनस 0। i कौन सा लूंगा? यहां भी जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है, यहां पर भी जा रहा है। व्हाट विल बी दिस करंट? हाउ मच इज दिस करंट? into 2 कर दूं? and what is this current? R equivalent. Have we understood this?
I'll give you a sheet on this where you can practice. But have you understood the concept? Now, see the effect of nodal analysis. Check करो इस मेथड का फायदा. ठीक? Suppose he says, I've connected one battery here. V. Find the current in this resistance. देखो question. What's that? चेक करते हैं. हाँ जी, आ जाओ, शुरू हो जाओ. Let's use the nodal analysis method. What is this potential difference? How much is this? V. क्या लूं यहां पर? सब लोग बोलो एक साथ. V. This is. If this is V, what will be this? And if this is 0, what will be this? कितना हो गया? V minus 0 by 2R is the current. Finished. Perfect. R equivalent कौन बोलेगा? सपोज मुझे R equivalent निकालना है, क्या लिखूं? जल्दी बोलो. V तो लिखना है ना, अपॉन करंट कहां कहां जा रहा है? इधर और इधर. ये कितना है? ठीक है. ये कोई रेजिस्टेंस आ रहा है? नो. आई ट्रैवल टू दिस पॉइंट. करंट कहां कहां जा रहा है? इधर एंड इधर. ये कितना करंट है? V by, and how much is this? Answer. That's all. Perfect. Wrap this off. Now there is a problem in HC Verma. When you go back home, read this as a solved problem. In HC Verma, they have solved this in one complete page. सवाल देखो आप. Have a look at the question. He says this is R1, this is R2, this is R2, this is R1, this is R2. It's not a Wheatstone bridge. So don't be very happy. Okay? And he says find the current in this. ठीक? Start करें. क्या लूं इसको? V. This as, right? And this as. Now one way to solve this. कौन बोलेगा? आप बोलो. सब let all the girls speak together. Write the node equation with this. बोलो सब लोग. सब लोग आवाज पूरी. आगे. प्लस इक्वल टू. इसका इक्वेशन बोलो. ओके. Fantastic. Equal to, can solve in X and Y. इससे भी इजी तरीका करते हैं. Let's simplify it more. सब इधर. अब let's use some common sense. ये करंट I1 and this current is same करंट बाहर आएगा. I1 plus I2 अगर एंटर करता है, एग्जिट भी इतना ही करेगा. हाँ या ना? ये कितना है? this resistance is. So this current should be, if this current is I2, what should this current be? बड़े ध्यान से देखना. ये कितना करंट? ये कितना?
What is this potential difference? Let me take this as x. How much is this? So therefore this should be, कहानी खत्म होगी. You reduce to one variable once more. आजा खेलते हैं. Do you agree this current and this current will be same? So that means this potential and this potential difference is same. If this is x, what is this potential difference? What should be this potential difference? What is this potential? So what should this potential be? Now, if I have to write this equation again, अब क्या लिखूंगा मैं? बोलो, सब लोग बोलो एक साथ. By perfect by equal to khatam. One single equation. This problem is solved in HC Verma in one page. Go and check it when you go back home. This is one liner. Dekho. So A, you use nodal analysis. B, you use symmetry. So if you can use both of them to your advantage, you're a winner. You become a winner. Solve करेंगे इसको? चलो छोड़ मानते हैं कि आपने solve कर लिया. Let's do some more questions. ठीक है? Perfect. X आ जाएगा? चलो करके देख लो एक बार. छोड़ो ना यार, क्या करना है? हो गया. X आ गया? चलो आगे चलते हैं. R equivalent बोलो, क्या लिखूं? R equivalent बोलो. V by I बोलो, क्या लिखूं? I यही है ना? This one and कितना लिखूं? Very good. खत्म. Answer. Perfect. He says, भाई साहब मुझे ना बता दो ये करंट कितना है. भाई साहब ले लो, ये कितना है? X. ये कितना है? So what will be this current equal to? X minus. Finished. This is a wonderful method. This is not in books. This is not known to people. Use it to your advantage. You will definitely have two problems in circuits. You use this. You save time. You spend that, just save kiya time to questions which you were thinking you could not attempt. Now that is called time management. शुरू के जो overs होते हैं ना, there is a period where you can accelerate. In examination also, there you have to select a period where you can accelerate. So period is selected by the number of questions you know. So if your methods of solving are simpler than other students, you gain from every question you solve. And you get that confidence also. Look, my method is better than him. I can solve faster than him. I have some more time left. I can probably spend this time on problems which I have not done. So that gives you an edge. This exam is about edge. In Cbse exam, all of you write a paper. All of you get 100 out of 100. All of you qualify. In this exam, out of 10 lakh students who write this exam, or 5 lakh students, only 5,000 come forward. And only 500 get the top ranks. The advantage to those 5,000 students is they are aware of the best techniques of solving problems. But you cannot understand problems till the time you don't understand the concept behind solving that problem. So in this period, there are two things which you have to understand. One, A, is the most important topics, because you have very less time, most important topics need to be done. You cannot leave them. Two, those most important topics have to be done in the best possible way to solve them. And the best way to solve them is solve them the fastest. You get my point? We will work on this technique of solving problems without solving them. Ye clear ho gaya? Ab, in the nodal analysis, in IDJ, there's a problem which came. Exact question aaya. Now, nodal becomes lengthy if the number of variables increase. Like for example, imagine a situation like this. I'm giving you a situation. आप उसको एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना लंबा हो सकता है सवाल. कुछ भी ले लो, आप देखना सिचुएशन.
This is 10, this is 5 volts, this is 15 volts, this is 20 volts, this is again 5 volts, this is 10 volts. 2, 1, 3, 4, 5. आर्बिट कुछ भी ले लो आप. अब नोडल में प्रॉब्लम क्या आएगी? आप इसको 0 लोगे तो रेड पेन रेड मार्कर ले लेते हैं. लिखने में टाइम मत वेस्ट करो, समझने में टाइम लगेगा. लेट मी टेक दिस as 0. इसमें क्या लोगे? वेरी गुड. इसको x लेना पड़ेगा. ये कितना है? इसको y लेना पड़ेगा. This could become y minus 5. This is y higher to lower. Fall y minus 5. ये कितना हो जाएगा? y minus 5 minus 10 higher to कितना? इसको z लेना पड़ेगा. आप देख रहे हो नंबर ऑफ वेरिएबल्स x, y, z. In this, you see, in JEE preparation, if you know one method, you have to know the other method also, because that method might not be applicable or might not sound very good, or it might take more time in solving a different problem. तो हमेशा दो पत्ते होने चाहिए जेब के अंदर. एक, I can use this nodal here, but if this question gets lengthier, I should have another method to solve it. Now I'm going to tell you that other method. आपको पता चला कि ये नोडल से लंबा क्यों होगा, है ना? So we have to find the method. So I'll drop this off. आप लिख लो उसको क्वेश्चन को. All set? This is 5 volts. अब आपको एक और इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं. This method has no name. ठीक? How many loops are there? How many loops? Assume same direction in both the loops. चलेगा? एकदम I1 and I2. अभी मैं लिखूं मत, पहले समझ लो. डायग्राम बना. I'm sorry, I'm going fast because you have very less time. So we'll have to hush up things fast. I1, I2. Clear? How many loops? I'll form a 2 by 2 matrix. तैयार हो जाओ. Different खेल है ये. This game is different. ये loop 1, ये loop 2. I'll call this element as R11. First column, first row. R12, this will be R21 and this will be R22. चलेगा? It means R11 would mean first loop की सारी resistances. R12 would mean resistance common between 1 and 2. Okay? R21 and R21 will be same. But जो in is the common between this and this and common between this will remain same. And what is R22? 2 की साइड. वाह. चल खेल. R11 कितना? 2 प्लस कितना? लिख दो. What is common between 1 and 2? ये कितना? 2 2 4. No problems? No issues? ये डब्बा नंबर 2. इसमें क्या डालना है? I1, I2 equal to. तैयार हो जाओ सब लोग. Now, this will have E1 and E2. Sigma E1 and sigma. पहले लूप की सारी EMFs को ऐड करना है. कोई दिक्कत है क्या? शुरू करते हैं. कन्वेंशन ध्यान रखना. If I am assuming that the current coming out from this is positive, then in every step I have to take this as positive. इसको मैंने पॉजिटिव लिया. ये कितना है? प्लस माइनस. इधर से निकलता क्या लिया आपने? प्लस. इधर जाएगा अंदर तो क्या लेंगे? कितना होता है ये? 10 माइनस 20 इज ये प्लस माइनस
प्लस कितना हुआ, +10 -20 इज -10, +5 इज, चालू ये कितना हो गया, इधर चलो 2 रूप में क्या लेंगे इसको, प्लस माइनस, -5 -15 -20, ओके कितना माइनस कितना, +20 कितना हुआ, दोबारा बताऊं, आई विल रिपीट दिस अगेन, बड़े ध्यान से सुनना है ये समझ में आता है, R11 R12 R21 R22, दिस विल हैव ऑल द रेजिस्टेंसेस इन लूप 1, कितना है 2 + 3 5 + 1, R12 is common resistance between these two, कितना है, this will also be 3, 2 is 4 5 9 + 3 is 12, this is I1, this is I2. Now what I'm saying is when you go in a loop, add all the batteries but conventionally correct. Like for example if you take कि ये जो बड़े वाला डंडा है इससे भैया करंट पॉजिटिव ले रहे हैं, if I'm taking this as positive, so this is positive, this will become negative, देखो ना, प्लस टर्मिनल से करंट निकलता तो उसको आप बोलते हैं पॉजिटिव, प्लस टर्मिनल में करंट एंटर करता क्या बोलेंगे उसको, तो ये कितना होता +10, ये कितना माइनस कितना हुआ 10 - 20 इज -10, ये प्लस टर्मिनल से बाहर निकलता प्लस, तो कितना हुआ -10 + 5, इधर आओ, प्लस टर्मिनल में एंटर करता है क्या लेंगे -5, ये क्या लेंगे प्लस में एंटर करता कितना लेंगे, कितना हो गया -20 -10 + 20, फाइनली क्या आया, यस और नो, पहला काम, दूसरा काम, तो आई कैन रिड्यूस दिस टू 6 3 3 12, I1 I2 equals -5 10, अब अगले स्टेप में आंसर आ रहा है, तैयार हो जाओ, द फर्स्ट डायगोनल, सब लोग ध्यान सुनो, द फर्स्ट डायगोनल टेक दिस एज नेगेटिव, जो पहला डायगोनल है उसको क्या लेना है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना, 12 6s, दिस माइनस दिस कितना हुआ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कितना हुआ, डिटर्मिनेंट आता है ना करना, बोलो जल्दी बताओ कितना, 60 60, क्या आया डेल्टा, स्टेप 3 रिप्लेस दिस बाय दिस, कितना हुआ -5 + 10, इसको रिमूव करना है, इससे रिप्लेस करना है, यहां क्या लिखूं, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट पक्का, I1 इज Δ1/Δ, Δ1 कितना, ये कितना है, आंसर है इसका ये, समझ में आया, समझ में आया, मैंने क्या बोला, मैंने 3 चीजें बोली, ए, हैव यू अंडरस्टूड दिस, आई सेड इन द सेकेंड स्टेप फर्स्ट डायगोनल के एलिमेंट्स को नेगेटिव लेना है, क्लियर, फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, कितना आया, नाउ रिप्लेस दिस बाय दिस, टेक द डिटर्मिनेंट वैल्यू 30, I1 इज Δ1/Δ, I2 कैसे निकालेंगे, करेक्ट करना रिप्लेस, सो -6 + 3 -5 10, वैल्यू बोलो कितना हुआ, -60 + 15 कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस I2 कितना हुआ, Δ2/Δ -45/, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, दिस करंट गोज लाइक, अंडरस्टूड, यस और नो, करो करो करो, फिर एक सवाल और देते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आप,
I have 5 minutes more, right? हो गया? I'll give you a question. करके दिखाओ फटाफट. टू लूप्स 2x2 मैट्रिक्स. समझ में आया? कैसे लेते? एक क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस हो जाएगी उससे. ओके, स्टार्ट. फोर 6 volts, 10 volts, 2 ohms, 4 volts. Start. How many loops? So, क्या करूं? स्टार्ट करो. ये ले लूं. This is डायग्राम बना लिया. अब शुरू करते हैं. क्या लिखूं? What will be R11? Oh, what is R2? R12? Fantastic. ये भी. And what is R22? इसको क्या करना है? इधर क्या लिखें? इधर I2. Now let's see what is the value of E1. -6. Oh no, -6. This is, पता है ना, +10 क्यों? Why? Entering you have taken negative, exit you have taken as, so this is -6 + 10. कितना हुआ? Fantastic. अब इधर चलते हैं. ऐसे गया. क्या लूं? क्या आएगा? डेल्टा. कितना? Δ1. क्या करूं? 4 -6 0. कितना? -8. I1 कितना हुआ? क्लियर? ठीक. अब Δ2 निकालते हैं. किससे रिप्लेस करूं? -4 0 4 -6. कितना? -24. I2 will be 24/8. How much? So this is 3 amperes and this is, आप जानते हैं मतलब क्या हुआ? The current is flowing like this. This is 1 ampere and the current is flowing like this is. Should I continue? The time is over. Time is over. So, thank you very much, boys and girls. Now, in the next class, they can't get problems. Can they? No. You get your problems. So, in the next class, we are going to study magnetism. But before that, we'll do potentiometer. Do you know potentiometer? कैसा लगता है आपको? आसान मुश्किल? ठीक. So, we'll discuss potentiometer. Thanks a lot. God bless. Thanks a lot.
hardened to. So today we are going to